अफ्रीकी ममालिक से एक तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। भारत की मरकजी हुकूमत ने कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में फैलने वाले खतरनाक इबोला वायरस के पेश नज़र अहम एडवाइजरी जारी की। वजारत सेहत के मुताबिक इन ममालिक में इबोला वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने इस सूरत हाल को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दे दिया है। हुकूमत हिंद ने उन तमाम भारतीय शहरियों को खबरदार किया है जो इस वक्त कांगो, युगांडा या जनूबी सूडान में मौजूद हैं या वहाँ सफ़र का इरादा रखते हैं कि वो इंतहाई एहतियात बरतें, मुकामी सेहत हुक्काम की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि भारत में अब तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन आलमी सूरत हाल को देखते हुए निगरानी सख्त कर दी गई है। अफ्रीका के इदारे सेहत अफ्रीका CDC ने भी कांगो और युगांडा में फैलने वाले इबोला वायरस को बरे आज़म के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस हंडी पुगुयू नामी खतरनाक किस्म से फैल रहा है, जो तेज़ बुखार, शदीद कमज़ोरी, जिस्म में दर्द और बाज़ सूरतों में खून बहने जैसी अलामात पैदा करता है। माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी निहायत ख़तरनाक है और इसमें अमवात की शरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक को हिदायत दी है कि एयरपोर्ट्स और बॉर्डर चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि मुतासरा इलाकों से आने वाले मुसाफिरों की जांच की जा सके। माहिरीन ने यह भी बताया है कि इस वायरस के खिलाफ फ़िलहाल कोई मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन या मखसूस इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए एहतियात ही सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत हिंद ने आवाम से अपील की है कि अफ्रीका मुतासरा ममालिक का गैर ज़रूरी सफ़र न करें और सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती उसूलों पर अमल करें। Ebola virus is a viral outbreak which was first reported in 1976 in the Democratic Republic of Congo and Sudan. One of the outbreaks occurred near the river Ebola, and that's why it got the name Ebola. We had a large outbreak in 2014 and the government of India made a lot of preparation then also. It is a virus which is usually found in bats, and it is a zoonotic infection. The bat causes infection in certain animals, and then human spread occurs indirectly through close contact or by eating infected animals or by close contact with some the secretions of a person who has got Ebola virus infection. The symptoms that we have in the beginning are fever, headache, body ache, sore throat. There can be a lot of backache, loose motion, diarrhea, vomiting can happen. And then subsequently there can be drowsiness, altered behavior, bleeding can start occurring. They can be bleeding from the mouth, they can be vomiting of blood, and even stool can have blood itself. So then it can lead to respiratory distress syndrome. There can be what we call DIC, disseminated intravascular coagulation, and this has a fatality which can be as high as 50%. Ebola virus spreads through close contact with an infected person, and therefore it is very important that people stay away from areas where there is an outbreak or where there could be an infected person. And that's why I think the government advisory of non-essential travel to areas where the infection or the outbreak has been reported is very important. You should be careful if one is coming in contact with a person who's come from that area to avoid very close contact, especially with body fluids and secretions, because that can lead to spread of infection. During the incubation period, which is between 2 and 21 days, a person is not infectious, and therefore then it doesn't cause any infection from one person to the other. Once symptoms start, then coming in close contact with body fluids, secretions can cause the infection, and then one needs to be careful. So unlike COVID-19, Ebola does not spread through droplet infection or through the air as we had seen of respiratory viral infections. And therefore, if we are able to have good infection control practices, avoid close contact with anyone who's been infected, take good practices of safety, then I think we can prevent the infection. And that is why the infection for many decades was localized only to the continent of Africa. It was only when the people who needed treatment were taken abroad or healthcare workers or infected people traveled to other parts of the world did the infection happen. We did see one person from India who had recovered from Ebola virus and come to India in 2014. That person did well, and therefore although this disease has a very high fatality rate, if we are careful, I think we can not have a case in our own country, and the chances of it becoming a pandemic or epidemic are very low. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।